object is created, you have to allot the memory and then load the data from this text file. Here is your symbol table and literal table text file. So this data is in a file. You can process directly from file, no issues. If we load it in a list and then use it, it will simplify our job. So one time loading from file to list and then onward list will be easily accessed. Updation easy ho jayega. Similarly, symbol table is here. So both files we are going to read and store data in these two objects, symbol table and literal table, list objects. So let's see what I did in a init method. So it's very simple to initialize all the elements of base table, all the entries of base table to -1. Simply run the loop from 0 to 15 and BT of ith location value is set to -1. Okay. After that, or you can directly initialize using curly bracket, give the all values as -1, 16 values you have to enter. Whatever is okay, go ahead with it. Then see here, memory allocation to your symbol table object. It is instantiated as a linked list. And keep a watch on this type. I'm creating node as a symbol table class object. So what is in symbol table.java class? See here. ST is my symbol table class, which will have symbol name, address, length, and the relocation bit. So if you are able to recall the data structure format given for symbol table in unit 1, same 4 fields I have maintained, and this constructor will set the values to that 4 parameters. So जब भी आप object create करोगे, you will be able to pass these values. In the same way, I had created literal table.java file also. So 4 fields in a literal table, literal name, its address, length, and relocation bit. And the LT constructor will help you to set the values to it. Okay. So for these two classes, I'm instantiating linked list as a object of this symbol table class. So one node of list will have 4 fields, symbol name, then its address, then its length, and the relocation bit. And 5th one is the link to the next node. Same is applicable to your literal class. After that, your job is read the data from symbol table.txt file and store it in this linked list. So I have created a file object and then use scanner class. I'm giving relevant name. Symbol table scanner object means read from symbol table text file. Okay. Until you have a next line, I'm reading one line at a time and directly splitting it based on spaces. So see here what I'm trying to tell. As you are having one line is having 4 fields, symbol name, its address, length, and relocation bit, and all are space separated here. And that is the reason this input line I'm going to break down in 4 fields using this split function. So split function will break that line. So line is tokenized in 4 words and that are stored in this st array directly. So st token array of 0 location is your symbol name, first location is your address, second location is your length, and third location is your relocation bit. So I can pass that value easily to st object. St is your linked list object. Add is a method with a list class. You are passing object of symbol table class here. अपने instantiative ऐसे किया है, right? So new st means you are creating new object of symbol table. So constructor will take this 4 values जो आपको वहाँ पे set करनी है. So st of token of 0, as I said, it is a name of symbol. Pass it as it is. Second field is the address, but your token array type is string. So convert it from string to integer because class में वो integer है. So parseInt integer dot parseInt will do that job for you. Same is applicable to your length. Length is also coming as a string, so convert it in integer. And the last bit is your character. So directly read the character at 0th location. Relocation bit R या A. Only 2 values we are passing. So from that string you are retrieving a character at 0th location and set it. Why I have to retrieve? Because my last bit in a symbol table.java is of character type. अब इसको string कर दो, no need of conversion.
no issues. Okay. So whenever you are saying new st, you are passing these 4 values. So this constructor will be called, and for current object, values will be set with this past value, actual parameters that you are passing. Okay. So similarly, for n number of lines, how many lines you have in your symbol table.txt file? You don't know. So for n number of lines, this loop is repeated. Read one line, break them in tokens, store them that values in your symbol table. So this will be repeated. And just what I did is copy, paste here. Instead of symbol table, I'm going to read literal table. Literal table object instantiated as a linked list with a template of literal table class. Open your file which is of literal table.txt. Name is literal table.txt. Same process I'm doing. And just read the one line, break it, and store it in your literal table class. So literal table object dot add method, pass the parameter. So these two are helping you to initialize your symbol table and literal table. So in init method, you have done initialization of base table, symbol table, and literal table. And now you are ready to move for processing. अगर आपके पास symbol table and literal table का data नहीं है, you won't be able to complete pass2. And once your init process done, you are going to switch to pass2. And now what I am doing in pass2, this op.txt file, where we are keeping location counter value and then rest of the statement. Few statements are same as your pass1 processing, and few needs a different processing or different things we have to do there. So we'll do it again. You have to read this intermediate code line by line. Keep a watch whether current line is having pseudocode or mnemonic. So we had created a list of all the pseudocode in pod.txt file. So it's here. All the pseudocodes are listed in this pod.txt file. So what you are supposed to do? Read input from input file out op.txt file and compare it with all the entries of pod.txt. जहाँ पे भी match मिल जाए, identify which pseudocode is found, and accordingly processing will be done. So in pass1, I'm going to repeat what we are doing for this pseudocode. Okay. So in pass1, start here, perform two steps. First is initialize location counter, and second is process the label. Label को हम symbol table में add करते हैं. Already label is added, so pass2 में वो burden कम हो गया. You just have to reset location counter. So same code हम reuse करेंगे pass1 का. Just remove the line of processing label. Already data and address available है आपके पास. No need to process again. Using pass1 में आपने using के लिए कुछ नहीं किया है, but pass2 will update base table. I'll show you how it updates. Similarly, DC and DS. So in pass1 you have computed the length of symbol, address of a symbol, and now it is available in symbol table. आपके पास वो data है here. Address भी है, length भी है. So what you are going to do for pass2? So in a pass2, whenever you reach to DC and DS, you just have to replace that line by the value. If it is DC, you have to replace the value. उस line पे आपको सिर्फ value of that symbol लिखनी है. So अभी example जो उसमें 5, data 1 का value है 5, so you'll write 5. And if it is DS, you just leave that space as a reserved space. So statements निकल जाएंगे, symbolic names निकलते जाएंगे. If you got literal LTORG statement, replace that statement by all the literal values. Then if you reach to mnemonics, and if mnemonic is of RX type, then replace the symbol table or literal table entries by their addresses. So if you notice, in pass2, we are not doing too much analysis. We are just combining information from tables and adding in our intermediate. So that's why a bit simple compared to pass1. So let's see how I have coded it. So if you keep a watch on your flowchart, it will be easy to understand for you. So I have initialized location counter to 0. I'll show you. Okay. Then I'm reading my input file line by line. I'll search it in a pod table and keep a watch which pseudocode found. DCDSA what to do.
EQU start है what to do, using है तो what to do. Likewise for each pseudocode, separate set of statement you have to write. And after comparing, if you reach to the statement like pseudocode is not there, so what's the possibility? Mnemonics हो सकते हैं, right? So you will start searching in a mnemonic table. If mnemonic table entry is matched, you have to retrieve the length and format and keep watch on format. If it is RX, this path will be followed. You have to process the symbol, replace it by its address, offset, base, index format. If it is RR, do nothing. Simply write and write in a output file. So here print or punch on a card means write to output file. Update location counter without pen. LC update hoga, and then you will be going back to the next line. And this entire code will be repeated. So I am following the same flowchart. I am not going to do anything other than this. Okay. So हमेशा आप ये डिजाइन सामने रखोगे, कोडिंग इजी हो जाएगा आपके लिए. So very first step, as I said, you have to open your file for reading purpose. This is my input file. Okay. As soon as you start pass2, you have to read the input file. So scanner SC object is helping to do that. I keep it output object ready to write to the output file. So it's the object of print writer class. Okay, so print writer will take the object of file output stream, which is writable object, and where to write, give the file name. आपको यूजर से लेना तो यूजर से रीड करके भी दे सकते हो, फिक्स नेम नहीं देना है, या ऑटो जनरेट कर सकते हो. That's not an issue. ठीक है. Then you are reading the line. If any line is available in your file, then only you will proceed. Read the first line from the input file. And now again, why I am splitting in words? Searching will be easy for us. That's the reason. Otherwise, आपके सारे words compare करने पड़ेंगे. So input line is broken down in different tokens. So what I am trying to say is, if you look at here op.txt, so this is your input line, and whenever you will break it, look at here, space separated, how many words you have. 100 is LC value, then space, program name, space, start pseudocode, space 100. If you move ahead, now यहाँ पे अगर आप देखोगे label exists है, pseudocode is started with label. If label is missing, you will be having location counter, pseudocode, and the operand fields. Another way is location counter, mnemonic, operand. Same is here in next line, few lines. Otherwise, you will have LC value and pseudocode only. LC value and literal, location counter, symbol name, pseudocode, its location, space कितना ले रहा है, like. So whenever I'll break it, if label exists, I'll get 4 words. If label is not exist, I'll get less than 4 words. So my search location will depend on this size. If label exists, where I have to compare, 0th location में array में आपका जाएगा 100, that is LC value, then label, and then mnemonic or pseudocode. If label is not there, LC value at 0th place and next mnemonic or pseudocode आपका first place पे जाएगा. So in that way you can set your search location की comparison कहाँ पे करना है उस line में आपको. So for that reason, I'm going to split the line and store them in this token array, word array. And then I'm passing that word array to search pot method. What this search pot method is doing? It will just compare your input line with the pseudocode entries. Pot.txt से compare करेगा. Wherever match found, it will process the pseudocode. Otherwise, it will return false. अगर pseudocode नहीं मिला तो ही false भेजोगे, right? So then only you will start mod search, mnemonic table search. Pot means pseudo opcode table and mnemonic opcode table. So see, in pseudo opcode table you have only one line, that is the name of, only one word in each line, name of pseudocode. But mod table अगर observe करोगे, it's bit different. It will have 4 fields. Mnemonic, हर एक line में 4 field है. Try to understand here. Space separated 4 fields. Mnemonic,
hex code length format, mnemonics hex code length format, 4 bits. Okay, so if we look at search port, let's see, I'm passing this token array जो input line से आ रहे, input file से, and search port में हम pot.txt read करेंगे. So whenever you reach to search ports here, pot.txt I am reading again using read pot object. Okay, after reading, what am I supposed to do? My input line and pot entries comparison करना. So I just few minutes back I told you where you will make a comparison. So my input file I had shown, like location comparison का location क्या है? Start होना चाहिए या using होना चाहिए या load AR, A, ST, SR likewise. So by default search location will be 1 or otherwise it will be 2 when you will reach to labels. Label optional होते हैं. So that is the reason. See here, my initial value of position, POS variable is position, search position you can say. Comparison का position है. तो by default उसको 1 ही रखा है, 1 पे ही मिलने वाला है. Only when you have the length of token input array 4. ये array की length 4 कब आएगी? जब आपके input में label रहेगा. And that time only it will be shifted to 2. तो हमेशा आप comparison post index पे ही करोगे. But when you will get label, you will search at the second position in that line. So a lot of comparison steps will be reduced because of this. So time bachega. And then I'm reading my pot line from the input file pot.txt, and that pot line I'm going to compare. See here, pot.line equals to tk is a token array and the position is a location in that word array. So location आपने already set किया है कि first और second position पे compare करना है, depend on the size. So मेरी input line pot.txt का line compare हो रहा है input line के token array से. And if match found, सबको क्या पता करना है? कौन सा pseudo code मिला है, right? So again I'll repeat the comparison. Hard coded start है क्या? So go ahead. Using है तो process using, likewise rest all pseudo codes. सेम आपने pass1 में भी किया है, recall that. And for start, pass1 में आपने क्या किया है? Location counter initialization followed by adding symbol table. But अभी pass2 में वापस update नहीं करना है symbol table, सिर्फ use करना है. So that line is removed. And here if start found, start के बाद position के बाद का जो location है वहाँ पे आपको operand मिल रहा है. Let me take you on op.txt here. Start is immediately followed by the operand 100. So if I set the position here at the start, +1 is my operand position. Same is applicable in rest of all the lines. So tk of position +1. Reason है direct by default add नहीं किया है. Position is pointing to start, +1 is your operand field. जो string में है, convert it to integer and assign to integer variable LC. That is location counter. ठीक है. Now in a output file we want location counter. So current जो LC है, I am writing it. So output is my print writer object. Output file का object है जिसमें हम file write करने वाले. .println method will write this message to your output file. So current value of LC followed by space, क्योंकि space separated values डालने वाले हो. And then just flush the buffer for next content. इतना ही आपको स्टार्ट सूडो कोड के लिए करना है. ओनली एलसी सेटिंग एंड राइट दैट एलसी वैल्यू इन आउटपुट फाइल. इफ योर करंट सूडो कोड इज नॉट स्टार्ट, तो सी आई एम फॉलोइंग दिस फ्लो चार्ट. स्टार्ट मिला तो क्या करना है? ओके, सो हियर इट इज नॉट गिवन बट कोडिंग लेवल चेंज कैन बी डन. एलसी इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा आपको. देन पॉसिबिलिटीज यूजिंग है. यूजिंग मिला तो आपको क्या करना है? ऑपरेंड वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, extract the base register number and update into a base table. Keep watch on my red rectangle here. So this is the step. Theoretically एक box में लिखा है. Practically while coding it, you need to make the changes. Multiple steps will be added. So let's see what. So if your input line is matched with using pseudocode, means क्या? Current line पे आपको using pseudocode मिला है.
So you have to update base table. ठीक है. So base table update करने के लिए आपके पास ऑपरेंड के लिए वैल्यू चाहिए and base register number भी चाहिए. So look at the structure of your program. Using followed by next position is star comma 15. So it is a single entity. हमने पहले break किया line space basis पे. So this factor is not divided because space ने comma separated है. So this operand you have to split on comma basis so that आप इन दोनों को separate out कर पाओगे. Star is your value and 15 is your base register number. Can anyone tell if you get star asterisk in your input line, what is the meaning of it? What it represent? Assembler में star का meaning क्या है processing में? Current value of location counter. Very good, I appreciate. So star indicate current value of location counter. So let's see what I have done. So TK of position 1, token is your array, position is the search position, +1 is your operand field, split comma basis. तो मैंने उन दोनों ऑपरेंड्स को सेपरेट कर दिया. सो इट रिटर्न्स एरे ऑफ स्ट्रिंग. सो ऑपरेंड एरे स्ट्रिंग बना लिया हमने, उसमें डाल दिया. सो 0 and 1 पोजीशन पे आपके ऑपरेंड मिल गए. 0 पे स्टार मिलेगा एंड 1 पोजीशन पे आपको 15 नंबर मिलेगा. बट अगेन दे आर ऑफ स्ट्रिंग टाइप, तो आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट इन इंटीजर. सो बेस रजिस्टर नंबर, इफ यू रिमेंबर BR वेरिएबल मैंने स्टार्ट में डिफाइन किया था. बेस रजिस्टर का नंबर स्टोर करेंगे इसमें. सो ऑपरेंड एरे फर्स्ट पोजीशन में जो वैल्यू है वही आपकी बेस रजिस्टर वैल्यू है. जस्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन कर दो. ओके, ऑटोमेटिकली डन. एंड देन OP ऑफ 0 इफ इट इज इक्वल टू स्टार. अभी हमारे करंट एग्जाम्पल में स्टार है बट इट्स नॉट नेसेसरी. यहाँ पे 45 भी हो सकता है. एनी वैल्यू कैन कम ओवर हियर. और मेरा कीबोर्ड थोड़ा गड़बड़ कर रहा है. You can come over here. So that can be a address, that can be a symbol name, कुछ भी आ सकता है. Right now star है, हमने जो दिया है वो asterisk है. So you have to keep a watch. If it is equal to star means current value of location counter is the values assigned to that base register. So base table index number 15 पे जो value जाएगा वो है current value of LC. I hope you guys are able to understand. Okay. So base table is a array, BR is the index. हमने जो अभी सेट किए रिसेंटली बेस्ड ऑन और इनपुट फाइल. 15 की जगह 13 आया, तो BT ऑफ 13 सेट होगा. ओके, एंड एस्ट्रिक है इसलिए लोकेशन काउंटर की वैल्यू भेज. अदरवाइज क्या करेगा, डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड कैन बी स्टोर्ड. वैल्यू है तो डायरेक्ट वैल्यू. एंड थर्ड केस यू विल ऐड हियर, वो मैंने फर्दर रखा है. एल्स करके आप यहाँ पे else if करके कंपेयर करो. if it is if it is alphabet then it's a symbol. so symbol table में जाके lookup कर पे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी. but till now keep it simple. asterisk आ सकता है या डायरेक्ट वैल्यू आ सकती है. so डायरेक्टली वैल्यू आप यहाँ पे असाइन करो. your base table is set. fine. then if it is a end pseudo code, do nothing. ऑलरेडी लिटरल प्रोसेस होके आए हैं pass1 में, आपको कुछ नहीं करना है. सिंपली राइट द लोकेशन काउंटर वैल्यू टू आउटपुट फाइल. इफ इट इज LTORG, अगेन यहाँ पे LC का लिटिल बिट प्रोसेसिंग है बिकॉज आपका LTORG इट क्रॉस चेक द करंट वैल्यू ऑफ LC इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट. जस्ट फॉर अलाइनमेंट आपके लिटरल टेबल का स्टार्टिंग लोकेशन डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए फॉर IBM मशीन्स. एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने करंट वैल्यू ऑफ LC डाल के जस्ट चेकिंग कि इफ इट इज डिविजिबल बाय 8 है तो इंक्रीज करते जाओ, नहीं है तो इंक्रीज करते जाओ, है तो नो इश्यूज एज इट इज रहेगा वैल्यू. ओके, सो व्हेनेवर यू एग्जीक्यूट दिस लूप योर LC वैल्यू विल बी डिविजिबल बाय 8 एंड देन यू कैन यूटिलाइज इट फॉर फर्दर स्टोरेज. ठीक है. इफ इट इज DC और DS, आपने ऑलरेडी लेंथ एवरीथिंग इज कंप्यूटेड. यहाँ पे सिर्फ आपको उसका वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है. ओके, सो इन pass2 you just have to extract the value. So how to do that? Extract the value or you can select the length from here
यहाँ से रिकैलकुलेट कर सकते हो, बट कीप इट सिंपल. आई हैव सर्च्ड इट इन अ सर्च सिंबल टेबल. सर्च सिंबल टेबल से हमने सिंबल चेक किया. इफ इट इज देयर एंड इफ इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन -1 मीन्स एड्रेस ऑलरेडी है आपके पास. जस्ट गेट दैट वैल्यू. सो ऑब्जेक्ट इज अ सिंबल टेबल ऑब्जेक्ट जिसमें आपने करंट एंट्री ऑफ सिंबल टेबल पिक की है. सिंबल टेबल में सेम टाइप के मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, आपको एक ही एक्सट्रैक्ट करना है एट ए टाइम जिस इंडेक्स पे मैचिंग मिला है, राइट. फ्रॉम देयर एक्सट्रैक्ट द लेंथ. तो आपकी लेंथ मिल गई. You just have to extract the value. If you look at your input line here, DC अगर मिला what it is. So symbol name data1 आप symbol table में search करेंगे. Here data1 found at second location. Second location object dot length means 4 extract किया आपने, length variable को assign किया. Fine. Then in a same input कीप वॉच ऑन स्टार्टिंग कोड, क्योंकि आपके कोड के अंदर का वेक्टर निकालना है, राइट. सो जस्ट फाइंड आउट इन करंट लाइन वेयर द इंडेक्स ऑफ स्टार्ट कोड इज फाउंड. इट रिटर्न्स द इंडेक्स नंबर. इंडेक्स ऑफ फंक्शन जो भी कैरेक्टर सर्च करे कहाँ पे है उसका फर्स्ट, जहाँ पे फर्स्ट मैच मिला उसका लोकेशन भेजते हो, इंडेक्स नंबर. सो यू कैन identify and till the end of the length -1 जो भी फैक्टर है वो एक्सट्रैक्ट करो and convert to integer. I did the same. So see here what I did. Operand field substring extract किया है. So substring का start location क्या होगा, उसी operand में index of starting code. ये मेरा starting code मैंने सर्च किया, जो भी लोकेशन नंबर आ रहा है वहां से लेके लेंथ फंक्शन end of your operand field. So what exactly get extracted? So मैंने यहाँ ब्लू कलर में जो लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 15 लिख रही हूँ, it will match with 15. ये नंबर एक्सट्रैक्ट होगा सिर्फ उस लाइन की वजह से. सबस्ट्रिंग जो है 15 will be extracted. Then convert it to integer. Right now directly write कर रहे हो तो no need of conversion. Simply use extract it and write it to your output file. So what you are supposed to write in output file, current value of location counter space right now जो भी वैल्यू आपने एक्सट्रैक्ट किए वो वैल्यू वहाँ पे पेस्ट करेंगे. फ्लश सो दैट नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे, बफर क्लियर हो जाएगा. अपडेट योर लोकेशन काउंटर बाय द सेम लेंथ. करंट वेरिएबल को जितना मेमोरी अलॉट किया है वही लेंथ से आपका एलसी अपडेट होगा. सपोज योर सिंबल इज नॉट फाउंड इन सिंबल टेबल, then you have to throw error message. So if this condition fails, else में जाके just print a error message. else में जाके हमने यहाँ पे symbol not found error दे दी. Okay. So right now we are in search mode, pseudocode processing पे ही है, and we are just यही हमने pass1 में भी किया है, just partial job यहाँ पे कर रहे हैं. Repeat the same thing for DS. Okay. सिर्फ आप यहाँ पे वैल्यू लिखते हो, राइट. इंस्टेड ऑफ दिस वैल ds इज जस्ट डिक्लेयरिंग स्टोरेज एंड रिजर्विंग द स्पेस. तो उस लोकेशन पे आपको लिखना कुछ नहीं है, दैट्स द डिफरेंस. बट रेस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग सेम है. सो सी आई एम कॉलिंग अगेन, वही कोड कॉपी पेस्ट किया है मैंने. सर्च सिंबल टेबल, पोजिशन -1 पे लेबल मिल रहा है उसको सर्च किया. इफ इट रिटर्न्स -1 मीन्स सिंबल नॉट फाउंड मैसेज डालोगे. If it is non-negative value means symbol exists at position, आपने return कर दी वहाँ से, and then you are retrieving that value from symbol table. That length is extracted. Length is required to add in LC. Line number 166 will be updating the LC value. And what you will write in your output file for this pseudocode, current value of LC space. Just for user understanding, I am writing here reserved, but actually आपको वहाँ पे blank space मिलता है जो अपडेट होगा जब आप एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम. तो अभी हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने रिजर्व, दिस स्पेस इज रिजर्व. सो रिजर्व की कीवर्ड वहाँ पे डाल दिया जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. तो मेरा एज अ प्रोग्रामर चेंज है. ओके. एंड देन सिंपली फ्लश द बफर, सो बफर क्लियर होगा. एंड LC इक्वल टू LC प्लस लेंथ.
So line number 163 में जो length मिला है that we have added here. Otherwise symbol not found error दे दोगे. So in this way pseudocodes, all the pseudocodes are processed. Okay. Apart from that, अभी आपके प्रोग्राम में जितने आ सकते हैं मैंने कंसिडर किए, but there are some pseudocode like drop, org, then equ. Right now we are not considering them, but it doesn't mean कि they are not there. आपके एक्चुअल असेंबलर में बड़ी सी लिस्ट होती है pseudocodes की. हम सिमुलेटर बना रहे, so I'm using few. So if any of this pseudocode is not matched, start भी नहीं है, using भी नहीं है, what to do? So we have to return true if pseudocodes found, otherwise drop a error message, no pseudocode found. Okay. सर्च कोड मैच हो गया आपका, बट एक्चुअल सूडो कोड नहीं मिला तो वैसा मैसेज है. एंड इफ यू हैव एंटर कंपेयर ऑल द एंट्रीज, कहीं पे भी मैच नहीं मिला मीन्स करंट लाइन पे सूडो कोड नहीं है, रिटर्न फॉल्स. पॉसिबिलिटी क्या है? निमोनिक्स हो सकते हैं. ओके. एंड व्हाट आई डिड इन सर्च सिंबल टेबल, सो इट्स वेरी सिंपल. एक एक लाइन आप सिंबल टेबल से फेच कर रहे हो. So my loop is iterating my symbol table till the size. One object I am taking, and that object symbol name is compared with the input symbol name. So input line का symbol और आपके symbol table में entry मिल गई. It means you have got the value. So return I means actual index. Otherwise return -1 means what? Search not successful. So, simple linear search we are doing over here. डेटा स्ट्रक्चर याद हो एंड लीनियर सर्च भी याद हो आपको. सो वेन एवर यू आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स फ्रॉम योर पॉट सर्च टेबल, वेर यू विल रिटर्न इन अ pass2 फंक्शन. यहाँ पे कम बैक करो एंड देन योर रेस्ट ऑफ द जर्नी स्टार्ट्स. सो आई एम टेकिंग यू ऑन फ्लो चार्ट एंड आई विल टेल यू व्हाट वी हैव डन सो फार. So right now we are reading from file, searching pseudocode table. If pseudocode matching, which pseudocode, कौन सा IDCDS start, and based on match we have taken the steps. कि start DCDS मिला तो क्या करना है, start मिला तो क्या करना है, using मिला तो क्या करना है, end के लिए क्या करना है. End here actually, end के सिर्फ आप pass2 पे control दे दो, pass2 end करोगे. That's it. So any questions till now जो भी किया उसमें, then I'll start with mnemonics. So half of the code is over this one and I have written nothing new. pass1 of assembler में हमने जो लिखा है वही यहाँ पे reuse किया है. I have not done anything new. I hope you guys are connected and able to understand. So whenever I'll execute that part, we can see whether our tables are loaded successfully or not. Let me execute this part. Ignore this in between statement, that was just for my we can say testing purpose to sort out some errors. But see here, you can have a comparison. आपके symbol table and literal table में जो value वही आपके लिस्ट में लोड किए हैं, दैट आई हैव प्रिंटेड ओवर हियर. सो सेम वैल्यूज आर प्रॉपरली pass1 का रिजल्ट और ये कंपेयर करके देख सकते, जस्ट प्रिंटेड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. एंड इफ यू वांना सी द रिजल्ट इन फाइनल आउटपुट, सो सी फॉर डीएस हमने रिजल्ट लिखा था, देन डीसी के लिए हमने 5 लिखा था, सो दैट केम हियर. नेमोनिक्स अभी तक हमने प्रोसेस किए नहीं है, सो दिस यू वोंट अंडरस्टैंड. DCDS का इफेक्ट दिखेगा. लिटरल टेबल एंड सॉरी LTORG एंड एंड पे कुछ नहीं करना है, सो इट जस्ट अपडेट द LC वैल्यू. अपडेटेड वैल्यूज यू कैन ऑब्जर्व हियर. 114 पे LTORG आया है. दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो वी हैव अपडेटेड टू 120 जहाँ पे आपका लिटरल स्टोर हुआ है. दिस इज लिटरल वैल्यू. सो अगेन ये जो स्पेस है ये वेस्टेड स्पेस है लाइन नंबर 6 में.
जो कभी भी कोई भी यूज नहीं होगी, दैट जस्ट फॉर IBM मशीन्स अलाइनमेंट्स। अगर आपको वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पे लिटरल लिख सकते हो, दैट विल बी योर चॉइस। ओके, सो एनी क्वेश्चन सो फार? सर्च मोड बचा है, I feel I can take it in the next session. If you have any questions, please. आपको समझने के लिए, and wherever essential I have added the comments, so I'll share this code with you guys. At least try to finish the pod search part according to that flow chart what we did in a pod search. Please go through this line by line and try to understand. मैंने हर जगह कमेंट्स डाल के रखे आपके रेफरेंस के लिए, and I have tried to make it as simple as possible. अगर आप इसी प्रोग्राम का मेरा इनिशियल वर्जन देखोगे, it was bit different and I have tried to dilute it for your understanding. यूजुअली क्लास में मैं ये स्टेप बाय स्टेप करवाती हूँ आपसे, ड्यू टू ऑनलाइन आई हैव एक्सप्लेन कोड डायरेक्टली. सो पॉट सर्च फंक्शन आज एक्सप्लेन किया है. सो यू आर लुकिंग अप फॉर pseudo code and if pseudo code found, relevant actions are performed. This is what you have learned today. So only half of the code is remaining, that is mnemonic search. If found, what to do, and your pass2 of assembler will be over. So I'm waiting for your queries. If you have, take a look again. Okay, you have initialized all the tables, required tables like symbol table, base table, literal table. Then after processing started, read the input file till you reach to the last line, and then you are searching in a pseudocode table. Okay, whenever you search in a pseudocode table, you may get the start pseudocode. So take the action for start. ये आपको manually theoretically मैंने explain किया है. Same we are coding here. What to do if using found, what to do if end found, LTORD, DC, DS found. Okay. And ये जो text processing है आप manually करके देखोगे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. So whatever you have learned today, please let me know if you have any questions. Because I have to finish macro processor as soon as possible, as our second unit is also over. Third unit के assignments हमें start करने हैं ना, so we have to wind up the things. हर एक यूनिट पे असाइनमेंट है आप लोगों को, यूनिट वाइज जाएंगे तो अच्छा रहेगा. Quickly let me know any questions from your side, guys. No response from your side, so I'm assuming you guys are able to understand. So I'll just show our manual so that you can start your write-ups. So I'll share the write-up material because pass1 of assembler you have to finish as soon as possible. Yeah, we have already done this first problem statement, theory. Okay, then it's flowchart. What the class diagrams are expected, one sample input file, sample output along with all the tables, then test cases, and then FAQs. So what you guys have to do is take this soft copy, write down the answers of these questions in your words, your language, put your roll number. Right now there is no provision here, but you have to add your roll number with the assignment. Okay, I'm allowing you to write the theory in a soft copy format. आप इसकी theory soft copy में लिख सकते हो. Flowchart is already there.
But what I'm expecting is you have to write the answers of this FAQs by hand. बाकी सब आप सॉफ्ट कॉपी में करके PDF जनरेट कर सकते हो, बट जब भी आपकी FAQs की बारी आ रही, you have to write it on paper and then add it that image, scan copy of that handwritten FAQ answers and add it along with it, and then you have to upload that PDF. You guys are getting what I'm trying to tell? आपके राइटअप का बहुत सा बर्डन मैं कम करके दे रही हूँ. इंस्टेड ऑफ हैंड रिटन सेम कॉपी आप एडिट करोगे. आई शेयर वर्ड कॉपी इंस्टेड ऑफ PDF. So what you guys have to do, write the answers of these theory questions by hand here. बाकी का as it is रहेगा, right? Flow chart and all, no need to draw. Diagram है ही आपकी. So your job is frequently asked questions जो है इनके आंसर आप आपके पेपर पे लिखोगे. Write your roll number on that paper. Take a snapshot of it. Add it here instead of these questions. आपका इमेज आएगा, हैंड रिटन इमेज, एंड देन जनरेट PDF. वो आपके सबमिशन के लिए यूज होगा. तो थियोरी एंड ऑल का मैंने बर्डन कम कर दिया, सिर्फ FAQs आपको बाय हैंड लिखने. ऑल ऑफ यू गेटिंग? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so if you don't want last minute chaos, start writing today only. Assembler pass 1 and your DLL assignment, these two assignments, FAQs you have to write by hand and keep both the PDFs ready with you for submission. So I'll share this on Teams, so your job will be simplified. And today we will stop here. And the reason of giving this FAQ is these are the questions asked during your practical exams. So अगर आप अभी से प्रिपेयर करोगे, प्रैक्टिकल एग्जाम डेफिनेटली अच्छे से जाएगा. Okay guys, your job is complete the write-up of DLL and pass 1 of assembler. I'm going to share on Teams your lab manual and today's pass 2 assembler partial code. You all have to go through that code and try to execute at your end.